So everyone wants to do research, and whenever the term research is coming in your mind, what could it strike at first time? I asked the many students a question, what is research? And sometimes they say that it's a process to generate knowledge. Sometimes they respond like verify existing knowledge or solving a specific problem. But my definition is little vague. I think there are many information in the surrounding. I want to explain my research definition later, and first I will make you clear why my definition is a little vague. Men's health truth or myth. We know that we heard every time like laptops and sperm count, and this actually is true. A recent study indicates that men who use laptop computer on their lap may cause their scrotal temperature to increase significantly. Increased testicular temperature has a well-documented link to the reduced sperm count. So it concluded that. And suicide rate rises in hot weather. Do you think that suicide rate or temperature or climate things link or not? Is there any association or not? Or is there any causation or not? Okay, there is two terms, that is the association and the causation. It will make you confused right now, but throughout the 40 days course, we will use that term very frequently, association and the causation. इसमें ये होती है कि सुसाइड और वेदर की एसोसिएशन दिख सकती है। लाइक आप देख सकते हो कि जब लोग समर आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा नहाने के लिए जाते हैं, एंड दे मे बी डेड है ना, तो उसमें डेथ रेशियो इंक्रीज हो जाती है। तो इट shows that hot weather leads to the suicide. There is seen as association, but is it the real causation? Is that real cause for the suicide? And that's the question mark. So some research also said that few cups of coffee may lower your colon cancer, and suddenly there is another research like coffee does not decrease the risk of colorectal cancer. Then again we have another research like certain types of hormone replacement therapy can double the risk of developing breast cancer, while some say another things. So like that, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब कोई कहते हैं कि ये चीज सही है, कोई कहते हैं ये चीज सही है। अब पहले तो इस तरह होता था कि कोई एक सर्जन होते थे, और वो सर्जन ने अगर कह दिया कि यार दिस इज द राइट थिंग टू डू, दिस इज द राइट प्रोसीजर टू डू, एंड एवरीवन फॉलो दैट। पहले तो ये भी होता था, आप लोग को एक प्रोसीजर शायद पता हो या नहीं, जो लीच होती है, लीच या लीच ही होती थी आई गेस। वो लीच को ना ब्लड सक करने के लिए, और उसमें हीरोडिन होती है, आई गेस हीरोडिन होती है, और उसके थ्रू को एंटीकोगुलेंट यूज होता था। ये भी रिसर्च था, और ये सक करने के लिए यूज होती थी। बट नाउ दे ऑल हैव साइड इफेक्ट्स, एंड वी कंक्लूड दैट इट्स नॉट द राइट प्रोसीजर टू डू। So, what do you mean by research? Here is the evolution. Every time evolution, every time change, new thing comes. Old things like we improve on old things. ठीक है? My definition is there are lot of information in our surrounding. There are lot of information in our surrounding. To put that information into the knowledge, put that information into the knowledge is known as the research. So, did you get my point? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी सराउंडिंग में होती है। कोई कहते हैं कि कोलन कैंसर इस तरह से सही होती है, कोई कहते हैं इस तरह से नहीं, उस तरह से सही होती है। एंड देयर आर मेनी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, देयर आर मेनी कोहोर्ट स्टडी, देयर आर मेनी केस कंट्रोल स्टडी, केस रिपोर्ट, सम केस रिपोर्ट से वन थिंग, सम केस रिपोर्ट से अनदर थिंग, and incorporating all the things, doing analysis and population bias, check every heterogeneity, and final produce of the one thing, and that one thing is knowledge, and that process to create that knowledge is the research. I got the best definition, that is research is the systematic and the structured process aimed at generating new knowledge, verifying existing knowledge, or solving a specific problem. It involves the sequence of steps that include identify a problem, formulating research question, selection and appropriate methodology, collecting and analyzing data, and interpreting the findings.
So that conclude the almost all the things of research. So research must be reproducible. What do you say about that? Research need to be reproducible. What does it mean, like reproducible? Research can be repeated by others. If I do one kind of research, then same kind of research could be done in next place. Yeah, if some kind of research is done in Pakistan, then same kind of research could be possible in Nepal as well, in US, in India as well. That's the significance of the research. Research must be reproducible, and the research must be evidence driven. Research must have objective, research must be systematic. तो फर्स्ट ये होती है कि हम आपको एपिडेमियोलॉजी की कंसेप्ट दे देंगे, बिकॉज रिसर्च विदाउट एपिडेमियोलॉजी इट्स नथिंग. Like I have quote one thing, medicine without research is opinion without confidence, and the base of the research is epidemiology. You have to understand everything, like what could you do the wrong thing, like bias, heterogeneity, bias, causal relationship. Do you know anything about the causal relationship? Maybe fourth year student might know or third year student might know. It is well written in the CMAT, but nobody focus on that thing. And it is the base of the research causal. If you didn't follow the Hills criteria, the research would be like they got thousand ways to do it in wrong way. So we have to follow the Hills criteria. I will explain what is the Hills criteria to do the original research. And now we will go in cross sectional things. Of course इसमें हम study design सारी explain भी करेंगे. How many types of study design, original research. Then we will go in the cross sectional now. फिर cross sectional में हम पूरी इसकी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे. Important part of the cross sectional research is the questionnaire. Everyone failed to do that. How to make the right questionnaire? Cronbach alpha. How to check this? How to check this Cronbach alpha in SPSS and R. And after that, after checking the Cronbach alpha questionnaire formulation, we will do the little project. What do you mean by little project? Little project is every Lean's criteria, I guess. Lean's startup, I guess. Lean's startup ये कहते हैं कि if you want to do big, launch it small. Launch it small, test this, and do the big. Same thing. When we need to do the data collection of the 400 or 300, we are not going directly jump into the ocean, like getting all the water. No, we will go find the lake. Was the property of the everything in the water. Same thing, we will do the first data collection of the 20 to 30 people, test our Cronbach alpha, test heterogeneity, everything, bias things, and data presentation. And if we think that now we are doing right way, then we will do the whole data collection. We will do the whole data collection and put it in SPSS, or you can IP for Excel. Excel is one of the best thing that Microsoft build up. You can learn R as well, how to do the analysis in R of cross-sectional. And after that, you will get to write manuscript and submission of it. मैन्युस्क्रिप्ट में जो हम स्ट्रोक क्राइटेरिया और ये फॉलो करेंगे. So basically this is the pattern of how we gonna summarize our 40-day lectures. इस तरह करके हम क्रॉस सेक्शनल कंप्लीट कर लेंगे. एंड द सेम थिंग, gene for depression, there are a lot of confusion at past, like every news report post one thing. Here is one, I guess I have एक इधर है. यस, आई गॉट दैट. रिसर्च पता है इस तरह होती है. ये मुझे बहुत फैसिनेट किया था. तो एक बंदा बैठता है एंड ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क एंड ही सेड दैट ए इज करेक्टेड विथ बी, ए इज कोरिलेटेड विथ बी, पी वैल्यू दैट इज द 0.56, and given C assuming D, and under, you don't have to understand that, I just want to present that meme in a quite entertaining way. तो अब ये जब ट्रांसलेटेड होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफिस वगैरह में इस तरह ट्रांसमिट होती है कि लाइक फॉर इमीडिएट रिलीज एंड साइंटिस्ट फाइंड पोटेंशियल लिंक बिटवीन ए एंड बी एंड अंडर सर्टेन कंडीशन. They will write the under certain condition. They don't write all the things these.
सो अब ये न्यूज रिपोर्ट कैसे करते हैं कि ए कॉजेज बी से साइंटिस्ट, अब इन्होंने ये चीज छोड़ दिया। अब ये जो इंटरनेट जो चलाते हैं वो कैसे पढ़ते हैं ये कि साइंटिस्ट आउट टू किल अस अगेन, then noticed by cable news and A causes B all the time. Then the people are dissatisfied. They make like a blog and everything and local eyewitness news. फिर एक ने बोलता है कि हाँ मैंने देखा था ये चीज, और न्यूज ऐसे ही फैल जाती है। एंड मतलब कि आपको सिंपल सी ये चीज कॉजल रिलेशनशिप ये चीजें पता ना होने से न्यूज इस तरह फैलती है। ये मैं कह रहा हूँ कि why that research, every point of research is significant, and at the end grandpa wearing these two word of a grandpa wearing these to prevent from it. Do you know why most public research are false? अब देखो मैंने आज तुम लोगों को बोला था ना कि मैं तुम लोगों को पूरी कंफ्यूज करके छोड़ दूंगा आज, कि पब्लिश्ड रिसर्च फाइंडिंग्स फॉल्स कैसे हो सकता है। पहले ये बहुत होता था। मैं थोड़ा सा इसकी एब्स्ट्रैक्ट में ये आर्टिकल आप लोग भी पढ़ लेना, वाई मोस्ट पब्लिश्ड रिसर्च फाइंडिंग्स आर फॉल्स। इसमें बहुत अच्छी इसने लिखा हुआ है कि रिसर्च क्लेम इज ट्रू में डिपेंड ऑन स्टडी पावर एंड बायस, the number of the studies of the same questions, the ratio of the true to no relationship. Research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller. देखो इसमें बहुत ज्यादा चीजें बताया हुआ है कि आपकी इफेक्ट साइज स्मॉल है, या आपने जिस प्रोजेक्ट में काम किया है उसकी सैंपल साइज एक स्मॉल कम्युनिटी पे है ना। आपकी डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, डेफिनेशंस ऑफ द आउटकम्स एंड डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोजर्स आर नॉट क्लियर, एनालिटिकल मॉडल डिफरेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल, हाँ ये आपको अगर यू आर द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट, एंड देयर इज वन बाइबा स्पेसिफिकेशन लाइक कि एक सवाल पक्का आ जाता है कि ऑस्पी में ना कि आपको अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको ऑफर कर रहा है विथ ट्रीप एंड मनी, वुड यू एक्सेप्ट दैट। हाँ, तो ये होती है कि इस तरह चीजें आपको बायस लेकर आ जाता है, तो आपने उस टाइम नो कहना है वरना फेल कर देंगी मैम। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ये स्टडी डिजाइन में बायस होने, सेटिंग्स, हेट्रोजेनिटी और मेनी रिसर्च फाइंडिंग्स कुड गो रॉन्ग। हम ये कोर्स में ये पूरी पढ़ेंगे, ये जितने भी चीजें इधर मेंशन है ना कि इफेक्ट साइज, पावर बायस, स्टडी बायस, बॉक्सोनियन बायस, पॉपुलेशन बायस, पब्लिकेशन बायस। ई व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिकेशन बायस? रिसर्च पब्लिकेट हो चुकी है, ठीक है, एंड देयर इज वन टर्म दैट पब्लिकेशन बायस। बेसिकली दिस इज सीन इन द मेटा एनालिसिस लाइक जर्नल इस तरह करते हैं ना कि वो उस तरह की स्टडी सिर्फ पब्लिश करते हैं जिसकी इफेक्ट साइज अच्छी हो, और जिसमें वो ट्रू रिलेशनशिप या उसकी इफेक्ट अच्छी हो, इस तरह करके ना वो स्टडी पब्लिश करते हैं। तो इससे ये होती है कि जो स्टडी उसकी नेगेटिव साइड इफेक्ट बता रहा है या नेगेटिव चीजें बता रहा है, उसकी इफेक्ट साइज थोड़ी सी कम है, हेट्रोजेनिटी और सैंपल साइज कम है, तो उस तरह की टॉपिक, उस तरह की पेपर को वो रिजेक्ट कर देते हैं। And when you got to meta-analysis that topic and you got only that good effect size data, and obviously after that you will get the best result. So that is the publication bias. We must not leave anything that could create heterogeneity, that could lead your research like in a biased way। ठीक है, आपने हर चीज सही करनी है, आपने पॉपुलेशन सैम्पलिंग सही करनी है, ठीक है, आपने डेटा कलेक्शन सही करनी है। डेटा कलेक्शन क्यों सही करनी होती है? टू प्रिवेंट दैट इंटरव्यूअर बायस। आपने डेटा कलेक्शन सही करनी है, आपने डेटा प्रेजेंटेशन एनालिटिकल मॉडल सही करनी है, एंड आपने सही विदाउट एआई और not much AI, you can't directly write everything from AI, but you can take help from AI. I won't say that you can take help from AI, you can take help from the AI, okay। तो फिर writing, so you can't do anything wrong in the research. If you do any step wrong, if you think that okay I just put that one thing by myself, when you do the data collection you might think like okay she said that, and you interpret your own thing and put it in the data collection, then you messed up your research. Okay, let's jump into the research study design.
These are the ways that you could do wrong in the research journey. ठीक है. Now the summary of the everything that I explained till now is that thing. When you start your research journey and when you start one project, first thing you could do wrong is the causal effect, that is the six hills criteria. Then there will be the chance of the random error. There is the confounding. I will explain all the things. What is random error? What is confounding? And what is information bias? What is selection bias? What is bias in inference? What is reporting and publication bias? What is bias in knowledge use? These are all the things that is the reporting bias you could do in the research. Study design देख लो. ये स्टडी डिजाइन में फर्स्ट इज descriptive study and the analytical study. So what does it mean by the descriptive and the analytic study? Descriptive study is the study that designed to describe occurrence of disease by time, place and person. So what kind of research is the descriptive study? Like the case series, case study. आपको पता है केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी होती है कि आपको कोई भी एक रेयर केस या डिफरेंट केस मिलते हैं, तो आप उसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी, प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, आउटकम इस तरह करके मेजर करके आप उनको एक केस स्टडी बना के पब्लिश करते हो. एंड दैट इज वन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी. And when you conclude all the case study, then it becomes the case series. There is the surveillance data analysis, prevalence survey, descriptive analysis of the routinely collected data like the registries, mortality data, है ना. जैसे सेंसस की जो मोर्टालिटी डेटा होती है कि हर साल पाकिस्तान में ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से इतना डेथ रेशियो या डेथ पूल है. एंड दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी. नाउ व्हाट इज द एनालिटिक स्टडी? Analytic study is designed to examine the etiology and the causal association. ये देखो इधर भी causal association आ गया. To examine the etiology. What do you mean by etiology? It is the cause. Now analytical study में there are experimental study, non-experimental study and the quasi-experimental study. What do you mean by the non-experimental study and the experimental study? And I will later explain the quasi-experimental. Experimental study is that type of study in which one is given as the intervention and another is given as the control and the placebo things and another drug, and we compare, we follow up them. Example like randomized control trial. One is the best example of the experimental study. And there is the non-experimental study. So non-experimental study is the observational study because it is non-experimental, so we observe that, है ना. बट इट इज द एनालिटिकल. ठीक है, ये एनालिटिकल है, ये एनालिटिकल है बट इट इज नॉट द एक्सपेरिमेंटल. इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे. मैं बहुत अच्छे से एक बार आपको समझा देता हूँ. जिस तरह के देर आर टू कंडीशंस, लाइक वन इज लॉन्ग कैंसर एंड अनदर इज नॉट लॉन्ग कैंसर. आपको देखना है कि लॉन्ग कैंसर की रिस्क फैक्टर क्या क्या है. ठीक है, तो अब ये तो नहीं करोगे ना आप किसी को कि एंथ्रासाइक्लिन दे दो या कोई चीज दे दो और उसको लॉन्ग कैंसर करवा दो. ये तो नहीं कर सकते आप. आप क्या कर सकते हो? आप पेशेंट चूज कर सकते हो. पेशेंट चूज करके एक लॉन्ग कैंसर की पेशेंट चूज करोगे एंड यू विल चूज द सेम काइंड ऑफ पेशेंट. नाउ इधर कॉजल की फिर से बात आ गई. आप किस तरह की पेशेंट चूज करोगे? 40-year-old मेल हु हैव लॉन्ग कैंसर एंड एज, उसकी वेट, बीएमआई, ओबेसिटी इतना, जिसकी उसकी जो characteristics है, that baseline characteristics should be matched with the control group, but he should not be the lung cancer patient. He or she should not be the lung cancer patient. नाउ हमने दो सैंपल साइज ले लिया और हमने क्या किया, उनकी हिस्ट्री को एनालाइज करना शुरू कर दिया. हिस्ट्री में उन्होंने उनकी एक्सपोजर क्या क्या थी, उनकी हैबिट क्या था, है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उन्होंने उनकी जॉब, उनकी ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग. And we compare that and we analyze that and we find the result. So could you get me the answer of what type of research is this? Case control. Yeah, very good, nice. Case control. Retrospective, I understand. Retrospective is also one of the quite best answer, but case control is one of the most best answer. Or case control is one of the example of the retrospective. It is one of the type of retrospective. Retrospective case control or retrospective cohort we can do. Thank you for the response. ओके, दैट इज द केस कंट्रोल. अब इसमें हमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना.
हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट वी डिड ऑब्जर्व एवरीथिंग, and that is the analytical or observational study that is included in the analytical study. Same thing, अगर हमारे पास क्या है, पेशेंट है, हमारे पास एक्सपोजर है, अब हम उनकी आफ्टर सर्टेन टाइम आउटकम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हमारे पास एक्सपोजर है पहले से ही। ठीक है, लाइक वी हैव द पेशेंट्स हु हैव लाइक job on certain factory or on certain place, who is more prone to certain kind of epidemiology or anything like that, like, तो उसमें हम वो पेशेंट को हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, एंड वी विल फॉलो अप देम until they suffer from the diseases. So what could be that research design? That is the cohort. ठीक है, हम क्या करें, कोहॉर्ट करें। हमारे पास अब क्या है, एक्सपोजर है, और हम सर्टेन टाइम के बाद, फॉलो अप के बाद हम आउटकम देख रहे हैं। वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग देम, वी आर एनालाइजिंग देम एंड वी आर ऑब्जर्विंग देम। दैट्स व्हाई इट इज द ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड इट इज कम अंडर द एनालिटिकल डेटा, एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन। Same is cross-sectional study. Now the main focus of this course, that is the cross-sectional. Cross-sectional, what does it explain, the cross-sectional? Cross-sectional has only one word that explain everything. That word is the prevalence. Prevalence is the word that explain the cross-sectional whole. Like, let's just take an example. It is like the snapshot. What is their prevalence? And that is the cross-sectional research. You are measuring the prevalence. Let's take a clinical study example, like simple, like breast cancer prevalence in over 50 female patient in services hospitals, or in Lahore, or in Nepal. ठीक है, in Kathmandu is the capital city of Nepal. So that is the prevalence research, is the cross-sectional, and in whole our 40-day series we will explain about the cross-sectional, do everything to how to conduct it and how to publish it. We have done the observational study, and we have done the experimental study, and what is quasi-experimental? You may have heard about the quasi. Do you know anyone meaning of the quasi? The investigator lacks full control over the investigation, but conducts the study as if it were an experiment. So it is the hybrid of these between two. That is the quasi-experimental. There is the investigator, but there is not like the control. It could be like single arm, and there is not like control, or it basically it started as the experimental research, but it turned into the observational, so that it is in the middle, that is known as the quasi-experimental. It's not truly experimental, and it's not truly the observational. That is the quasi-experimental. Yes, sir, explain is. What is randomized control trial? Randomized control trial, it is one of the most जिसकी सबसे ज़्यादा वो टॉप प्रायोरिटी होती है, सिस्टमेटिक रिव्यू सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, उसके बाद रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आप लोग को मैं एक रिसर्च हायरार्की भी बता देता हूँ। रिसर्च हायरार्की ये होती है कि सबसे पहले आती है आपकी मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक रिव्यू। ये हम नेक्स्ट कोर्स में पढ़ाएंगे। एंड डू यू नो दैट दोज हु टेक दैट क्रॉस सेक्शनल कोर्स विल गेट मेटा एनालिसिस कोर्स ऑफ हैंडी रिसर्च नेक्स्ट मंथ इन डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, तो फर्स्ट में मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू, देन यू गेट randomized control trial, you now cohort, case control, and cross sectional, देन केस स्टडी, केस सीरीज, है ना। तो इस तरह करके हायरार्की होती है रिसर्च। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मेटा एनालिसिस की होती है। यू माइट हैव क्वेश्चंस लाइक, भाई आपने मेटा एनालिसिस क्यों नहीं शुरू की? I have done that meta-analysis course as well in the last year. When I did the meta-analysis course to my students, what problem do I get? Like, they didn't have the basic of the research. They are frequently confused in the words, like didn't have heard anything like bias, heterogeneity, and those things that they need to learn before getting meta-analysis, they are lack. That's why I launched that cross-sectional course, and I made that thing so that or when I launch my meta-analysis course, it will facilitate me and it will help you as well. Okay.
अब इसमें हम कैसे क्लासिफाई करें कि कौन सी रिसर्च कौन सी स्टडी डिजाइन में फॉलो करनी चाहिए? If there is the intervention and the investigator assign exposure, then it is experimental study. If there is not intervention and there is no exposure, then it is the observational study. So if there is the random allocation, then it is the randomized control trial. And if there is not randomized, then not random people are not randomly allocated, then there is the non-randomized control trial. ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। ये मतलब सिंपल सी चीज है कि मतलब जब ये दो एक हॉस्पिटल में हम अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं और दो पॉपुलेशन आ रहा है फॉर द सैंपल साइज, तो हम इस तरह करेंगे कि कोइन फ्लिप करेंगे। इफ कोइन टॉसेस हेड देन ही शुड बी सीटेड हियर, एंड इफ कोइन टॉसेस टेल देन ही शुड बी सीटेड देयर। And that's how that is one of the method to do the randomized. If there is the randomized control trial, then it is the if there is randomization, then it is RCT, and if there is no randomization, then it is the non-RCT. Same thing, if there is the comparison group, then it is the analytical study, and if there is no comparison group, then it is the descriptive study. Do you know आपको क्रॉस सेक्शन में कोई कंपैरिजन तो नहीं दिखा था ना? आपको क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे, एक सर्टेन कंडीशंस में उधर एक्सपोजर भी था, आउटकम भी था, एंड यू टेक द होल डेटा एट द सिंगल टाइम, लाइक एक्सपोजर एंड आउटकम। आप क्या करेंगे उसमें, आप वो भी देखेंगे कि इसने दारू पिया है कि नहीं, है ना, आप वो भी देखेंगे, और इसको लीवर कैंसर है कि नहीं वो भी देखेंगे। मतलब कि you are not follow up the patient, but you take the data of the exposure and the outcome at the same time. That is the snapshot research, and that is the descriptive and the cross sectional study. एनालिटिकल स्टडी में, अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, अच्छा कंपैरिजन, हाँ ये भी सही है कि ये देखो कंपैरिजन तो नहीं होती, बट एक्सपोजर एंड द आउटकम एट द सेम टाइम। If exposure lead to the outcome, then it is cohort study, and if it outcome lead to the exposure, then it is the case control study, and if the exposure and the outcome at the same time, it is the cross sectional study, and if there is any comparison group, like in the case study and case report, उसमें हम उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। दैट्स हाउ यू क्लासिफाई ऑल द रिसर्च। It is the major thing. Besides that, there are all the other research form as well, like audit, NIS, database calculation, database analytical, like about CDC Wonder. We will launch that course in the end of the year. First, we will complete the original research, that thing, and after that, we will complete that experimental study meta-analysis. And at the end of the year, we will complete that course. That's how we will complete all the form of research. What would be the next step? What would you do once this lecture ended up? आपने एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर दिन में रीड करना है, ठीक है, वन रिसर्च पेपर यू हैव टू रीड अ डे। इट वुडंट टेक मच टाइम। फर्स्ट थिंग, आपको इतना ज्यादा समझ भी नहीं आएगी, सो स्टार्ट विद द क्रॉस सेक्शनल एंड द ओरिजिनल स्टडी एंड द केस रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह आप पढ़ना शुरू कर दें। once it becomes the habit, like allocating 15 to 20 minutes a day or 1 hour a day, then you will involve in the research things। फिर आप ना इसमें लगे रहेंगे। आपको वही चीज है ना कि आपको एक चीज में फोकस करते रहेंगे ना, तो इट आफ्टर 15 days, 20 days and the 30 days, it would take time, but once it becomes set in your mind, then you don't have to do any hard work later on। But beginning first step will always be hard for you, and it will teach a lot to you, not only the course content, but a lot of things beside the course content. First step will teach you everything like consistency, discipline. So I simply made this slides like purpose and the importance of research. I have already explained it. What is the importance of the descriptive research? Like it identify the condition, prevalence of the diabetes in the population, simply in one example. Then it also explains the association between the obesity and the hypertension. It explains the causation, like smoking really cause the lung cancer or not. That is about the causation research, and effect of the new drug on the survival. That is the evaluation research. And what is that? That is the randomized control trial. That is the purpose and the importance of the research. Let's summarize our slides today. Then experimental and the observational research, cross-sectional study cohort case control. Either here is the randomization cohort, cross-section cohort case control. We have already explained that conceptual position of the cross-sectional study.
So where is the position of the cross-sectional study? What does it describe? It describes the disease burden. I have already explained that. It identifies the positive. I forget one thing. What is the one thing in the why cross-sectional research is so much significant? It establishes the questions. It generates the question. ठीक है, ये क्वेश्चन जनरेट, क्वेश्चन मीन्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए that would be the best research is the cross sectional, because when you get to know about the prevalence, then you can find out what is the real cause behind it. So cross sectional research is the one which can generate you the hypothesis. Then core concept of the cross-sectional study. Here is the few example, like the research survey 1,000 adults and records like blood pressure status, BMI, and this study finds that higher prevalence of the hypertension among the obese individuals. अब ये रिसर्च किस तरह हुआ होगा इसमें? फर्स्ट में अगर इस रिसर्च को क्रॉस सेक्शनल में एक्सप्लेन करो, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. And there are 1,000 adults. So 1,000 adults, they define the population. Then population में मेल फीमेल डिफाइन होंगे, एज, उनकी बीएमआई, ओबेसिटी, ये सारा कुछ डिफाइन होने के बाद उनकी क्या लिया जाएगा? ब्लड प्रेशर लिया जाएगा. एंड अब उसमें ये होगी कि हाउ मेनी आर देयर ओबिस एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट ओबिस, एंड इन ओबिस एंड नॉट ओबिस व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द हाइपरटेंशन और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ देयर ब्लड प्रेशर. और इस तरह करके क्या होगी? इसकी एनालाइज होगी. सो द रिजल्ट इज देयर इज द हाई प्रिवेलेंस ऑफ द हाइपरटेंशन अमंग द ओबेस इंडिविजुअल्स. And that is how you're gonna do the cross-sectional research and publish the result. A university survey measures sleep duration, anxiety levels. Students with shorter sleep duration report higher anxiety, and that is the result of the cross-sectional research. There is another example, like national survey collects smoking status and the presence of the chronic cough. ये देख रहे हो आप, ये दोनों चीज एक ही बार में ले रहे हैं. हम जब क्वेश्चनियर बनाएंगे एंड डेटा कलेक्शन करेंगे तो हम स्टूडेंट से ये भी लेंगे कि आपकी स्लीप ड्यूरेशन क्या है और आपकी एंजाइटी लेवल. एंजाइटी लेवल ऐसे नहीं पूछेंगे कि आपकी एंजाइटी लेवल कितनी है, नहीं, इस तरह नहीं होती. उधर एक प्रॉपर क्वेश्चनियर होगी, एंजाइटी की एक बिल्डअप क्वेश्चनियर अवेलेबल होती है. उसके थ्रू हम एनालाइज करेंगे कि उनकी एंजाइटी लेवल कितनी थी एंड उनकी स्लीप ड्यूरेशन क्या थी. तो हम क्या करेंगे? एसोसिएशन देखेंगे. एसोसिएशन देखने के बाद हम ये हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि higher the sleep duration, lower the anxiety level, or lower the sleep duration, higher the anxiety level. इस तरह करके हम hypothesis generate करेंगे, and that hypothesis will be analyzed in or do the research in case control or cohort study or randomized study, and final research will be published or final accepted research will be published. Smoking and the cough. Chronic cough is more among the smokers. That could be the possible answer in the cross-sectional research of this. Now, measured use in, that is the prevalence I have already explained. What is prevalence? Prevalence is the number of existing cases. ओ हमारी सीमेंट की एक बुक में इस तरह एक देखने पिक्चर है सीमेंट की, ये बेस्ट लगती है मुझे. आप लोगों में देखा होगा, दैट इज द इंसिडेंस. ये प्रिवेलेंस हो गई. इधर से पॉपुलेशन आ रही है, वाटर आ रही है, इधर से जा रही है, मतलब कि ये बर्थ हो रही है और ये डेथ हो रही है, और इधर जितने भी है दैट इज द प्रिवेलेंस थ्रू आउट द ईयर. सो प्रिवेलेंस मीन्स नंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग केसेस upon total population that we have to calculate. Now, how would we measure that association? There will be the odds ratio, prevalence ratio, risk ratio, and percentage, mean, and mean, median, mode, confidence interval, standard error, a lot of things. We could cover that in our next lecture. So what are the applications of the cross-sectional study? I have already explained them. It is basically most useful in the public health because it helps to disease surveillance and the national health survey, and it helps to estimate the burden of the disease in the hospitals. Like I have already explained that recently Islamabad mein, I guess, am I right? There is a high prevalence of the HIV because of some incident like blood transfusion. उसकी वजह से तो हम अब इस तरह की जब वो रिसर्च है, वो कौन सी रिसर्च बेस इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है? दैट इज द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. हम जाएंगे उसमें दिखेंगे कि कितने में प्रिवेलेंस है क्रॉस HIV
in that hospital, and the reason is blood transfusion. After that, policy planning and screening programs, and why cross sectional is so much important, and why it is because it is very quick and the cost effective. We just need to do the data collection, we don't need to any follow up, and like we can study the multiple exposure and the outcome. It will be explained in the next lecture what is the multiple exposure, and it will be suitable for the large population. Yes, since we don't have to follow up, then we can collect the data from the large population as well, and it is useful for the hypothesis generation. You just have to remind that for the cross-sectional research. So what is the limitation? I have already explained that limitation is that it lacks temporality because follow-up duration, there is no any follow-up duration, and we can't conclude the condition of that. We can't say that obesity causes the hypertension from the cross-sectional research. We can say that there is the prevalence of hypertension in that much amount population of the obese population. Okay, हम ऑबिस पॉपुलेशन में इतने हाइपरटेंशन की प्रिवेलेंट है कह सकते हैं, बट वी कांट से फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च दैट obese obesity cause the hypertension. We can't say that because exposure preceded outcome or outcome preceded exposure, that too lack in cross sectional result. Because cross sectional में हम क्या करेंगे, exposure and outcome को एक साथ ही data collection करेंगे. That's why we can there is the lack of temporality, there is no causal inference, there is reverse causation. We will explain that in the next lecture. And there is a lot of bias in the cross sectional research as well. Possible bias, like there will be the selection bias, there will be the information bias. What are the information bias? Because let me explain a little bit. Like there will be the interviewer who collect the data from the sample size, and he just got tired and he didn't get that much information from the participants, and he put he put the data on his own. So that is the interviewer bias. And there could be the recall bias, like participant or the patient forgot the exposure or forgot the things that he need to tell in the right way, and there will be the reporting bias as well. So that is the key epidemiology concept that we explained today.